Welcome to this lecture. In this lecture, we will study Gram-Schmidt Orthogonalization Process. जब कभी भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, we can think about an Li subset in V. Okay, so suppose this is RV, and from this V, we are collecting a subset S. Okay, this is our set S, and that is Li. ठीक है, अब जब हमारे पास एक एल सेट है तो वी आर श्योर कि ये वी के किसी न किसी एक सब स्पेस को जनरेट करेगा. ठीक है, सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस डब्ल्यू इज द स्पैन ऑफ एस एंड हेंस क्योंकि एस एक एल सेट तो है ही, तो इस केस में वी विल से दिस डब्ल्यू इज अ सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, और इन दैट केस एस विल बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर दिस डब्ल्यू. ओके, अब क्या हम एक ऐसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर दैट प्रोसेस गिव्स अस कि अगर हम इस V के लिए एक इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दें. ओके, इनर प्रोडक्ट ऑन दिस ऑन V, देन रिजल्टेंट हमारे पास V बन जाएगा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर वी कैन अज्यूम द सेम सेट S. नाउ दिस सेट इज आर S प्राइम, और इसकी खास बात क्या है कि नाउ दिस सेट वी वांट कि ये एक ऑर्थोगोनल सेट such that the same space W can be generated by this set S prime. Okay, you know the condition कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसका कोई एक Li सबसेट है S, इस Li सबसेट से जनरेटेड एक सब स्पेस है W. V पर जब हम एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देंगे तो V को हम कहेंगे एक इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब इसके इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में फ्रॉम दिस Li सेट S वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन S प्राइम orthogonal set such that that set S prime generate the same subspace which was generated by the set S. ये जो प्रोसेस जिसमें हम इस S से एक ऐसा S प्राइम सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम एक Li सेट से एक ऑर्थोगोनल सेट हम ऑब्टेन कर रहे हैं. राइट, अब जब भी S एक Li सेट है तो इसका हर एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, और जब इसका हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो हम किसी ऑर्थोगोनल सेट में हर एक एलिमेंट को उसके नॉर्म से डिवाइड करके एक ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बना सकते हैं. सो बेसिकली इस Li सेट से हम एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं, और दिस S इज अ बेसिस ऑफ W एंड द सेम ऑर्थोनॉर्मल सेट is a basis, or more precisely is an orthonormal basis for this W. Okay, now this discussion is for this subspace W, and we can extend this discussion for this V also. So our ultimate way is कि क्या V के किसी एक ऑर्डर्ड बेसिस से, क्योंकि ऑर्डर्ड बेसिस एक Li सेट है, तो V के किसी ऑर्डर्ड बेसिस से हम एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? And the answer is yes, and the process we use to transform an ordered basis into an orthonormal basis is known as Gram-Schmidt Orthogonalization Process. ओके, ये इसी मेन प्रोसेस तो यही है जहाँ से हम एस एस प्राइम को अचीव कर रहे हैं, बट इसका एप्लीकेशन हम ऑर्डर्ड बेसिस में देख रहे हैं. सो बेसिकली इस लेक्चर में हम इसे ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी राइट एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशन. हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि अगर S एक ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल प्लस नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो S एक ऑर्थोगोनल सेट है जिसका हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो उस केस में हमने ये प्रूफ किया था कि ये एक Li सेट है. ठीक है, अब Li सेट हमें किसी भी वेक्टर स्पेस का साइज बताता है, क्योंकि अगर V एक वेक्टर स्पेस है और वी आर सेइंग कि बीटा इसका बेसिस है, तो वी आर श्योर कि इस सेट से बड़ा कोई भी Li सेट V में नहीं होगा.
अगर V के अंदर द सेम वेक्टर स्पेस V, अगर हमारे पास कोई एक सेट है, सपोज वी आर हैविंग अ सेट, सपोज गामा विच इज एल आई, ओके, दिस गामा इज एल आई, तो हम ये कह सकते हैं वी आर श्योर कि ये गामा हमेशा इस बीटा के अंदर ही होगा। इसकी साइज, इस साइज की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी साइज हमेशा गामा की साइज हमेशा बीटा की साइज से कम ही होगी। साइज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो अगर बीटा बेसिस है तो इसके अंदर, and you know the famous statement that any ordered basis or any basis is the largest Li set in the vector space V। तो क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट से हमें Li सेट मिल रहा है, तो हम बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस का एक लोअर बाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि बेसिस में एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर आपके पास इस सेट एस में 10 एलिमेंट है, सपोज कार्डिनलिटी ऑफ एस इज 10, जहाँ पर हमारे पास 10 वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है और सारे के सारे नॉन जीरो है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस एस इज एन एल आई सेट। तो एस जिस भी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, वी आर श्योर कि उसकी डायमेंशन एटलीस्ट 10 है। हो सकता है 10 हो बट कभी भी 9 नहीं होगी, क्योंकि अगर डायमेंशन 9 होती तो 10 एलिमेंट रखने वाला हर एक सेट एल डी होता, बट हियर वी हैव दिस एस whose cardinality is 10 and which is Li, okay। so इस डिस्कशन के बेसिस पे आई एम गोइंग टू राइट एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सो let H be the vector space, containing complex valued functions, or more precisely continuous functions defined on 0 to 2 pi, okay। then prove that H is not a finite dimensional वेक्टर स्पेस। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको ये सेम क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट के साथ भी हो, बट हमें इस एच के लिए, क्योंकि हम एक बार ही इसको पढ़ रहे हैं, तो इस एच के लिए जो इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट F and G belongs to H, then we define an inner product on H as F comma Z is equals to 1 over 2 pi integration from 0 to 2 pi एफ टी एंड जी टी बार डी टी। हमने प्रूफ किया था कि ये एक इनर प्रोडक्ट है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये शो किया था कि ये जो एफ जी है, इस तरीके के, इसके यहाँ पे हम एक सेट एस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विच इज़ ऑर्थोगोनल, ओके। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। लेट एफ एन टी is equals to e to the power iota n t, where this n is coming from z, okay। in that case then we can take this set S being f of n, where these n are coming from z, so you can choose n equals to 1 2 3 and all the elements will lie in the set S, okay। and we have shown that this fn and in product with fm is equal to 0 for m is not equals to n, that is S
is an orthogonal orthogonal subset of H. ठीक है. Further, we know that Fn is never be equal to 0 for all n belongs to Z. n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है. इसका मतलब S का हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है और एक S ऑर्थोगोनल सेट है. तो इम्प्लाइज करता है कि S एक Li सेट है. ठीक है. सो आई कैन राइट therefore S is an Li सेट. ठीक है. और इसका मतलब इस एच के किसी भी ऑर्डर्ड बेसिस की कार्डिनलिटी एटलीस्ट एस की कार्डिनलिटी जितनी तो होगी ही होगी. अब सिंस एस इज एन इनफाइनाइट सेट, सो वी कैन कंक्लूड कि एच का डायमेंशन इनफाइनाइट ही होगा. देयरफॉर एस इज एन एल सेट. थस एच will be an infinite dimensional इनर प्रोडक्ट स्पेस. ठीक है. यही हमने प्रूफ करना था. क्योंकि एल आई सेट आ गया, इसका मतलब उसके ऑर्डर्ड बेसिस का कार्डिनलिटी एटलीस्ट एस की कार्डिनलिटी जितना होगा और एस की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, इसलिए एच का डायमेंशन इनफाइनाइट होगा. So this was an important example that we need to discuss on behalf of the previous statement. Now let me write the process. So this process is Gram-Schmidt process, orthogonalization process. Orthogonalization process. So this process is the process of constructing an orthonormal set S prime from an Li set S of an IPS such that the span of S is same as span of S prime. तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं ग्राइम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस. ओके. अब इस प्रोसेस को समझने के लिए लेट मी कंसिडर अ फाइनाइट केस where we will discuss a subset having the two element. ठीक है. So let me write that understanding the process. So let S is equals to W1 and W2 be a subset, or let me write an Li subset of a vector space. Okay. ठीक है. अब क्योंकि एक Li सेट है तो ये एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकता है, subset of a vector space, and hence generates a two dimensional vector subspace. Okay. Now from this set S we want to construct a set S prime. ठीक है. So what we want to construct an orthogonal subset S prime that is equals to V1 V2 S prime is equal to this one, such that
such that span of S is equals to span ऑफ एस प्राइम। ये हमारी मेन कंडीशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें सेट गिवन है, इससे हमें ऑर्थोगोनल सबसेट बनाना है। सो ये प्रोसेस हमने ये हमें भी प्रोसेस फॉलो करना, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रैम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सो इस प्रोसेस के लिए वी डिफाइन, सो वी आर डिफाइनिंग लेट this v1 s prime का जो फर्स्ट एलिमेंट है that is same as the first element of s, okay, and for the second element v2 is going to be defined as w2 minus c w1. You can write c v1 as well, okay, such that this is v2 and v1 are orthogonal. So we will choose this c in such a way that v2 and v1 are orthogonal. ठीक है, such that this v1 is orthogonal to v2 with suitable choice of c. तो हमें इस c को ऐसा चूज करना है जिससे कि v1 और v2 ऑर्थोगोनल हो जाए। ठीक है, नाउ इफ यू आर सेइंग दैट v1 एंड v2 आर ऑर्थोगोनल, तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे? ठीक है, सो लेट मी राइट कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेक्टर w2 को। ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग आवर वेक्टर w1, एंड इन आर प्रोसेस दिस w1 के सेम ही हमने v1 को लिया है। नाउ सपोज इन सम सेंस दिस c टाइम w1 इज दिस वन, ओके, दिस इज c टाइम w1। ठीक है, नाउ what we are supposing कि w2 is perpendicular to w1, that means यहाँ जो एंगल बनेगा that angle must be of pi by 2. So this is nothing but v2. So from the vector point of view, you can see this w2 is equal to v1 plus this cw1 plus v2 will be equals to w2, and hence this v2 is nothing but vw2 minus cw1. ओके, ये हमेशा हमें इस तरीके से फॉलो करना है। जब हमें दो एलिमेंट के सेट के लिए ये कंसेप्ट समझ में आएगा, देन वी कैन जनरलाइज दिस फॉर द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स एंड एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर अब हम ये प्रोसेस या फिर ये कंडीशन इस पर अप्लाई करें कि v2 और v1 दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, एंड द मोमेंट वी आर सेइंग कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दैट इज inner product v2 comma w1, and w1 is same as v1. Okay, you can write here v1 or w1 whatever you want, then this will be equals to 0. Okay, what I'm writing that v1 orthogonal to v2, this implies this one. Okay, now this implies we are supposed v2 as w2 minus c time w1, and then w1. We know that inner product is always linear in the first component, so I can write this as w1 comma w2 sorry w2 comma w1 inner product, then minus c w1 comma w1, that is equals to 0. Now from this you can write the value of c. So c will be equals to inner product w2 comma w1 over, this is nothing but the square of norm, so this is the square of norm of w1. So this is the value of c. We know this w1 is same as v, so this is same as inner product w2 with v1 over square of norm of
V1। तो ये C की हमें वैल्यू मिल चुकी है। नाउ इफ यू राइट दिस वैल्यू in this equation where we have defined this V2, then we will have our vector V2. Okay, then V2 will be equals to W2 minus inner product W2 V1 over in square of norm of V1. ओके, दिस इज द वेक्टर V2। और ये कंडीशन ही ऐसी थी कि V1 और V2 दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए, तो इस तरीके से ये C की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ C एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय V1 और W1। ओके, आई कैन राइट V1 दैट इज सेम एज W1। ओके, सिंस W1 इज सेम एज V1, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे W1 लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस इन विच वी आर आइडेंटिफाइंग V2 with the identifying this C in such a way that the vectors of S prime are orthogonal.